Hello, friends. Good evening. Today, uh, I have a very important topic to discuss with you, and we will deliberate on this topic uh, as conversation. The topic which I have selected, you can see on your this screen. It relates to the fundamental duties of the citizens. It has been often observed, experienced that the citizens in India are very much discreet, conscious, and cautious about their fundamental rights, about their legal rights. But unfortunately, and I feel it ludicrous that we are absolutely not conscious, cautious about our fundamental duties, which our Constitution of India has imposed upon us. And in other words, I would say the Chapter 4A, which was inserted by way of amendment in the Constitution of India, is the most forgotten part of our Constitution of India. I have never seen, either in seminars or in courts, law courts, ever irradiating, focusing on the fundamental duties of the citizens, which, according to me, is the epicenter of all problems, all controversies that our society is facing today, that our nation is facing today. Because with the rights, you have the corresponding duties also, which needs to be observed, followed equally as you follow consciously your rights, maybe the legal rights or the fundamental rights. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, first I would let you know some very important aspects of the constitution. You know that after a long struggle, freedom struggle, we able to get this document, which is a grand norm. It's the main law of the land. Everything in your society, whether it is a political system, whether it is a social system, whether it's administrative system, any system,
that evolves around the Constitution of India. So it is the main law. Any law which transgress the principles of Constitution is always declared to be ultra vires of the Constitution by the law courts. Such is the importance of your Constitution. It is the governing document. It lays the map road that how the nation will be governed in future. This was perhaps the ideals of our constitution framers, our forefathers. Constitution of India, for your information, have 22 parts, about 12 schedules, and so far, ever since this constitution has come into being, about 5 amendments have been affected from time to time. So, this is such an important document life of the masses that any deviation from the constitutional principles can take the nation on the wrong track. So it is very important. And above all, what is important, imperative here is, which you, the masses, the people must know, that this constitution has been given by the people of India, which means that the people of India must have thorough knowledge about the constitution so that the managers of constitution could not aberrate, could not take you to the wrong side, which may have to pay your generations, may have to pay the present generation, may have to pay if any slight aberration is there by the managers of the constitution. अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो मैनेज कर रहे हैं, अगर वो, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है, तो वो आपको मिसलीड कर सकते हैं। और ये मिसलीडिंग में फेटल फॉर यू, इससे आपको नुकसान हो सकता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जो सिटीजन है, एवरी सिटीजन, हर कोई, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है,
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वरना ये पॉलिटिशियंस जो जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट्स में भेजते हो, गवर्नमेंट में भेजते हो, आपको मिसलीड कर सकते हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी तो एट लीस्ट यू कैन एजिटेट, और उससे आप यू कैन परsuade these people to come on the track। तो इस ये इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो है नॉलेज होनी चाहिए। हमारे स्कूलों में बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसकी पढ़ाई जो है, जो बेसिक उसकी पढ़ाई है वो करवानी चाहिए। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो नॉलेज है वो बेसिक स्कूल लेवल से जो है वो होनी चाहिए, ताकि जब वो बच्चे बड़ी क्लासेस तक पहुंचते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है वो काफ़ी हद तक जो है उसको वो गेन कर चुके होंगे। लेकिन ऐसा जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बच्चों को अवेयर करवाते हैं, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से जो है वो they become deprived of the constitutional value, because we don't impart such or imbibe such constitutional sense in our children। तो ऐसे ही वो बड़े होते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, पीएचडी हो जाते हैं, बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंच जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेंस है वो दे लैक, जिसकी वजह से सारी जो परेशानियां हैं जो सोसाइटी में, नेशन को वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज मैंने ये टॉपिक चुना था कि हम अपने राइट्स के लिए कितना अवेयर रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ए में जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं, उनके बारे में हम उतने ही इग्नोरेंट हैं जितने हम कॉन्शियस हैं अबाउट आवर राइट्स। तो जो एपिसेंटर है हर प्रॉब्लम्स का वो यहीं पे है कि हम अपने राइट्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम निभाना नहीं चाहते हैं। और जब तक हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं हम निभाएंगे नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक मैंडेट है, तो जो प्रोग्रेस है इन द रियल सेंस कंट्री में वो कभी हम कर नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली विटनेस द सिस्टम of manipulations if we don't follow
the fundamental duties. So, according to me, the chapter 4A, part 4A of the Constitution of India is the most forgotten part of Constitution. This part has never been discussed anywhere. As I have said, that even in the courts, in my 30 years of law practice, I have not seen, witnessed any discussion in the law courts. You can assess the extent of the problem so far as the fundamental duties obedience is concerned. This is ludicrous. It should not happen. If really we are interested to ameliorate, to develop our nation in the real sense. Now, what are those fundamental duties? Those fundamental duties, I have one question before the viewers when they will watch this video. They will definitely write to me or give their comments that how much knowledge you have, how many times you have read the constitutional mandate of fundamental duties. I would be eager to see this on my comment box. Now, I will read one by one the fundamental duties and see honestly whether you are following the following these fundamental duties. Don't lie with honestly observe whether whether you follow these fundamental duties which has been incorporated in Article 51A of the Constitution of India, whether anyone has told you regarding these fundamental duties which the Constitution of India has imposed and joined upon us. The first, this is Article 51A, Fundamental Duties, incorporated in Part 4A of the Constitution of India. Number one duty which has been laid down is to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag, and the national. Now, the first duty
contains that you have to respect. आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। इसके जो आइडियल्स हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी रेस्पेक्ट करनी है आपको। नेशनल फ्लैग की करनी है, नेशनल एंथम जो है उसकी जो है रिस्पेक्ट करनी है। तो ये अ, जो है आपकी फर्स्ट फंडामेंटल जो है ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है। और जो सेकंड है उसमें टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom। वो लोग जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस जो हासिल की, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जो है वो आ, जी सकें। आपकी जनरेशन्स, आपके बच्चे इंडिपेंडेंटली विदाउट सब्जेक्शन टू स्लेवरी वो जी सकें। तो उन सब की हमें उनको फॉलो करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनके नक्शे कदमों पे हमें चलना है। ये आपकी जो है सेकंड ड्यूटी है, फंडामेंटल। और आप कितना इसको फॉलो करते हैं, कितना नहीं करते, आप अपने आप से इससे पूछने की कोशिश करिए। और नंबर 3 जो है सी, टू uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. That is very, very important. सॉवरेन जो है उसको हमने अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है। ये हम सब की कलेक्टिव जो है वो ड्यूटी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आम सिटीजन है। सबकी कलेक्टिव ड्यूटी है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करें और उसको प्रोटेक्ट करें। और जो यूनिटी है और जो इंटेग्रिटी है उसको भी हम अपहोल्ड करें और प्रोटेक्ट करें। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी भाषा का इंसान जो इंडिया में रह रहा है, कोई भी रिलीजन का इंसान जो इंडिया में रह रहा है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पे इम्पोज किया है कि हम जो है सबको बराबर अपने साथ लें, समझे, अपहोल्ड करें और इस यूनिटी को और इंटेग्रिटी जो इंडिया की है उसको हम प्रोटेक्ट करें। नंबर डी 4 जो है, इट लेस to defend the country and render national service when called upon to do so। सबकी सिटीजन्स की ड्यूटी है फंडामेंटल कि हम अपनी कंट्री के लिए काम करें, उसको डिफेंड करें। और जब कभी हमें हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत पड़े, हम
अपने आप को उसकी सर्विस में ऑफर करें। ये हमारी फोर्थ ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पे इम्पोज की है। नंबर फिफ्थ ई, टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities. Renounce practices derogatory to the dignity of women. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, howsoever, howsoever high he or she is, ये सबकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम हारमोनी जो है उसको प्रमोट करें, ब्रदरहुड जो है उसको प्रमोट करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम सिटीजन हो, कि हमारी ब्रदरहुड की जो एक जो इम्पोज की है कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल, उसको अवॉइड करें कि कोई ऐसी चीज ना हम करें जिससे हमारी ब्रदरहुड के ऊपर कोई नुकसान पहुंचे। और रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज जो हैं, इन सब की रिस्पेक्ट करें, कोई भी ऐसा काम ना करें, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो और चाहे वो आम सिटीजन जो हैं उनकी साइड से हो, कि इन चीज़ों के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक हार्मनी होनी चाहिए और एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है उसको हमने प्रमोट करना है। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करना, कोई ऐसा डिरोगेटरी काम नहीं करना जो वीमेन की डिग्निटी को ठेस पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है इम्पोज की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। और ये जो ड्यूटी है कि अपने कल्चर जो है, हेरिटेज जो है, उसको प्रिजर्व करो, ना कि इसको नुकसान पहुंचाओ, ना कि इसको इरेडिकेट करने की कोशिश करो। ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. कि this is very important कि हम अपने एनवायरनमेंट जो है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करें, ना कि उसको नुकसान पहुंचाएं किसी वजह से। और आपके जो फॉरेस्ट हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना है। आपकी लेक्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपके रिवर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। वाइल्ड लाइफ जो है, जो एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जितने भी लिविंग जो क्रिएचर्स हैं उसके लिए हमें हमारे मन में दया होनी चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, ना कि उनको लिविंग क्रिएचर्स को नुकसान पहुंचाना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
other fundamental duty है which our Constitution of India has enjoined upon all the citizens of India, which everyone has to follow. फिर एच क्लास में एक ड्यूटी है फंडामेंटल टू develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. तो हमें अपनी नेशन को डेवलप करने के लिए दुनिया में compete करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करें, ना कि सुपरस्टिशन, ना कि सुपरस्टिशियस टेम्पर डेवलप करें। हमें साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना है टू प्रोग्रेस एंड टू compete विद द वर्ल्ड। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और हर एक में एक स्पिरिट होनी चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए, इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए, और रिफॉर्मेटरी माइंड होना चाहिए, ताकि नुकसान देने वाला माइंड, स्पिरिट। फिर आई क्लास में एक फंडामेंटल और ड्यूटी आपके ऊपर दी है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस। It is the fundamental duty of every citizen of India to protect your public property and not to cause harm to your public property। जैसे लोग जो हैं एजिटेशंस वगैरह करते हैं, जब एजिटेट होते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर जाते हैं। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, against the fundamental duties which has been incorporated in class I of the article 51A of constitution of India। और ये क्लास ये भी हम पे एंजॉइन करती है, इम्पोज करती है कि हमें वायलेंस से दूर रहना है, वायलेंस नहीं करनी है। वी हैव टू एब्ज्यूर वायलेंस। और हम सब जानते हैं कि दिस इज अ कंट्री ऑफ Mahatma Gandhi, who always practiced, propagated non-violence. So we have to take that path to progress further। क्लास जे में एक ड्यूटी और इम्पोज की है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of and achievement। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कैसे बनना है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आपको एडवाइस कर रही है, आपको आपके लिए मैंडेट है, ये इम्पोज कर रही है कि एक एक्सीलेंस का जो पाथ है उसको आप फॉलो करो, बोथ इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, ताकि एक ऐसा एंडिएवर हो सके जो हम सबको एक हायर लेवल, इस हायर लेवल अचीवमेंट जो है हम कर सके। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। दिस यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट एंडिएवर टू अचीव दिस स्पिरिट of the
fundamental duty which this uh, article impose on you, और जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो इम्पोज की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हम सब के ऊपर, हाउस हाउएवर हाई लो, we are all citizens of India. And squarely, and this Article 51A imposes fundamental duty on each and every citizen of India to follow. के में ये कहा गया है, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between age of 6 and 14 years. So this clause was inserted as a fundamental duty on पेरेंट, कि जो कोई भी पेरेंट है, कोई गार्डियन है, ये उनके ऊपर ड्यूटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो अपने बच्चे को मौका दें, अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन हासिल करने की, और उनको एजुकेशन वो दिलाएं. This is the fundamental duty which has been imposed on the parent or the guardian, not only on the parent but on the guardians also, to children to have education. तो ये एक बहुत ही फॉरगॉटन पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4A, कि ये प्रैक्टिस नहीं करते, ये प्रोपोगेट नहीं करते कि हमारी जो हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, राइट्स, इफ यू हैव राइट्स then there are corresponding duties attached to your right also. Suppose, for example, if you say that I want to be a minister, I want to be a prime minister, I want to be a president of India, I want to be a doctor or to be engineer or any professional lawyer. This you may be well aware about this, that if you do this, अगर आप ये करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, लायर बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. Now, after you achieve your goal as a right, then commences the corresponding duties which you have to obey, to follow. और वो क्या है कॉरस्पॉन्ड, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई बीमार है तो उसको और उसका इलाज करो. ये नहीं है कि आपका सिर्फ राइट था डॉक्टर बनने के लिए तो आगे आपकी ड्यूटी कोई नहीं है. तो अगर आप अवॉइड करोगे अपनी इस ड्यूटी को तो आप कितना प्रोग्रेस कर पाओगे? आप कभी भी एज ए डॉक्टर प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. Similarly, if you become a prime minister or a minister, even then you have duties
imposed upon you people by the constitution to follow. You cannot say that I have become a prime minister or a minister. Now I have achieved everything. I have no any duty. और अगर आप अपनी ड्यूटीज जो हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए मिनिस्टर उसको फॉलो नहीं करते तो कंट्री कितनी प्रोग्रेस करेगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं तो दीज आर द फंडामेंटल नोबल ड्यूटीज which has been imposed by the Constitution of India on each and every citizen of India to obey, failing which your nation will never progress, your society will never progress, your institutions will never prosper. Such can be the consequences if you fail to follow the constitutional mandate of fundamental duties as enshrined Part 4A, Article 51A of the Constitution of India. I hope something might have been cleared to my viewers, my friends, and hope they will wound over it, they will deliberate on it, what I have explained here, and will follow and will practice and will propagate among his or her fellow friends to follow the constitutional matters. Thank you very much.